Good morning, dear students. This is account class of class 12th. Students, we are doing chapter number 4, retirement of a partner. And in previous lecture, we have discussed how we can calculate new profit sharing ratio after the retirement of any partner. Today, we will discuss next topic, gaining ratio. We will calculate today gaining ratio. So students, it is calculated when a partner retires, right? So when partner retires, his share of profit is taken over by the remaining partners. So the ratio in which the remaining partner's share increases is called gaining ratio. Gaining ratio is the ratio in which the remaining partners will pay the amount of the goodwill to the retiring partner. जो retiring partner है वो अपना शेयर छोड़ के जा रहे हैं एंड रिमेनिंग पार्टनर्स उसको शेयर करेंगे और जितना शेयर उनका इंक्रीज होगा दैट इज कॉल्ड द गेनिंग रेशियो. ओके, एंड गेनिंग रेशियो क्यों कैलकुलेट की जा रही है, व्हाई वी कैलकुलेट गेनिंग रेशियो? फर्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है इसमें, जो गुडविल, शेयर ऑफ गुडविल और शेयर ऑफ रिजर्व, शेयर ऑफ गुडविल जो उसको लेके जानी है जाते हुए, जिसको पार्टनर्स रिमेनिंग पार्टनर्स देंगे, दैट विल बी इन गेनिंग रेशियो. Okay, so how we can calculate gaining ratio? We have two methods to calculate gaining ratio. Second, first of all, if there is no any other information in your question about the new profit sharing ratio, then we will let ki jo gaining ratio hai, that is the same ratio, that will be same. Means old ratio will be new ratio, and again sacrifice by retiring partner and gain by remaining partner will be also same. Means जो old ratio है वही new ratio होगी और जो शेयर छोड़ के जा रहा है उसको old ratio में ही डिवाइड किया जाएगा, right? Second thing, if new profit sharing ratio of the remaining partner is given, if new ratio is given, then gaining ratio is calculated deducting old ratio from the new ratio. Then we will use formula new ratio minus old ratio. Okay, gaining ratio. Then we will use this formula if new ratio is given in your question. Okay? If not given, then we will let old ratio is new ratio, and same ratio will be gaining ratio, right? Then students, open page number 5.5, illustration number 8. Illustration 8. Sharma, Verma and Neetu were partners sharing profits and losses in proportion of 1/4, 1/8, 10/16. Sharma, Verma and Neetu. Ratio is 1/4, 1/8, 10/16. Okay. Calculate the new profit sharing ratio between continuing partners if Sharma retires. Then Verma retires, then Neetu retires. Also calculate their gaining ratio in each of the above situation. So students, in this question, there is no any other information regarding. We'll let कि जो old ratio है that is the equal to new ratio. यही same equal new ratio के है. और जो sacrifice रिटायरिंग पार्टनर कर रहा है एंड रिमेनिंग पार्टनर्स उसको गेन कर रहे हैं, दैट इज आल्सो इन द ओल्ड रेशियो. ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल टेक एलसीएम 16 4 2 10 4 2 10. Got it? With common factor 2. 2 2s are 4, 2 1s are 2, 2 5s are 10. So ratio will be 2:1:5. Okay, this is the actual ratio between among the three partners. Now, first of all, first Sharma retires. Okay, then gaining ratio and new ratio. Both ratio will be 1:5. New ratio भी 1:5 होगा और जो आपकी gaining ratio है that also will be 1:5. Okay, second thing, then Verma retires. If Verma retires,
then ratio will be 2:5. And last, Neetu retires, then new ratio will be 2:1 and gaining ratio also will be 2:1. Okay. Illustration number 9. A, B, C are partners. ABC are partners sharing profits and losses in the ratio of 4:3:2. B retires. A and C decided to share the profits and losses in future in the ratio of 5:4. So in this question, new ratio is also given. So calculate gaining ratio. We will use this formula, new ratio minus old ratio. Illustration number 9. Okay. First of all, new ratio is equal to 5:4. Old ratio 4:3:2. 4:3:2. Who retires? B. B retires. Okay. Now we can calculate gaining ratio. Gaining ratio of A and C. First of all, we will check new ratio 5/9. That is the part of share of A, and 4/9. This is the share of C. Okay. Now we will deduct old share. 4 plus 3, 7. 7 plus 2, 9. 4/9 minus 2/9. Okay. Now we can deduct 5/9 minus 4/9 is equal to 1/9. 4/9 minus 2/9 is equal to 2/9. So gaining ratio will be 1/9 is to 2/9. Means 1:2. 1:2 is the gaining ratio in this question. Clear? Illustration number 10. Illustration number 10. A, B, C, D are partners sharing profits and losses in the ratio of 1/3, 1/6, 1/3, and 1/6. C retires and A, B, D decide to share the profits and losses equally in future. Calculate the gaining ratio. So in this question, new ratio also given. We will use this formula. First of all, old ratio 1/3, 1/6. 1/3, 1/6. Take LCM 6, 2:1:2:1. So old ratio is this one. Okay, this is the old ratio, and new ratio, equal ratio in all remaining partners, 1:1:1. Okay, who retires in this question? C. Okay, this one. So except this person, we will calculate gaining ratio remaining partners. First of all, A's gaining ratio. Formula is new ratio minus old ratio. New ratio is equal to 1/3 and old ratio is 2 plus 1, 3, 3 plus 3, 6. 2/6. So 0. Then B's gaining ratio 1/3 minus 1/6. Okay, it will be 1/6. Then C's gaining ratio. D's. C retires, and so we will take D. D's gaining ratio is equal to 1/3 minus 1/6 is equal to 1/6. Again,
So B and D will gain. B and D partner. Okay. A gains nothing and B and D gain 1/6 each. Right? So gaining ratio between A and B and D will be 0:1:1. Okay? This ratio, this is the gaining ratio. Clear? Next, illustration number 11. Three. 11. Madhu, Surbhi and Nikhil are partners without any partnership deed. So students, if there is no any partnership deed, we will take profit sharing ratio of all partners equally. Okay. So Madhu retires. Calculate the future ratio of the continuing partners if they agreed to acquire her share in the ratio of 5:3. Second, equally also mention their gaining ratio. Okay. So first of all, we will calculate new ratio. Then we will calculate gaining ratio. Okay. So in this question, there is no any partnership deed. So we will take equal ratio. We will let equal ratio, all ratio is equal to equal, means Madhu, Surbhi and Nikhil. 1:1:1. Okay. And Madhu retires. Calculate the future ratio of continuing partner if they agree to acquire. Acquire means take करना, लेना. ठीक है, उन्होंने acquire किया है उसकी रेशियो को 5:3 में, right? So Madhu's share was 1/3. Madhu's share was 1/3 part. So that part, 1/3 part, we will divide in 5:3 ratio. Okay, 5/8 of 1/3 will take Surbhi, and 3/8 of 1/3 will take Nikhil. Okay, so Surbhi will take 5:3 में distribute करना है, so 5/8 of 1/3. And second person is Nikhil. Nikhil will take 3/8 of 1/3. Okay. It will be 5/24. It will be 3/24. Okay. So जो भी शेयर उन्होंने टेक किया है, लिया है, गेन किया है, that share we will add in their old ratio. आप उसकी old ratio में उसको add कर देंगे. So new ratio will come, right? Old ratio is 1/3 of Surbhi. Surbhi new share. Surbhi's new share is equal to 1/3 plus 5/24. Okay, calculate it. Secondly, Nikhil new share is equal to 1/3 plus 3/24. Okay, calculate it and we get new ratio 24, 8 plus 5. 13/24. 24, 8 plus 3. 11/24. So ratio will be, new ratio will be, new ratio will be 13/24 and 11/24. 13 ratio 11.
Okay, so second step is gaining ratio. So students, जिस रेशियो में एक्वायर किया गया है मिस सुरभि और निखिल ने उसके शेयर को, सेम रेशियो विल बी गेनिंग रेशियो. ये देखो 5/24 and 3/24. Surbi gains 5/24 and Nikhil gains 3/24. So gaining ratio will be 5/3. कैलकुलेट करने की नीड ही नहीं है, यहीं से कैलकुलेट हुआ हुआ है. So gaining ratio will be 5/3 and new ratio will be 13/11. Clear? Note down fast. In this question, second point is also given. If both the partner, Ms. Surbi and Nikhil, acquire retiring partner share equally, that part you will do by yourself. Means यहीं पे ही change हो जाएगा. 1/2 of 1/3 share will take Surbi. 1/2 of 1/3 यानी कि retiring partner share will be take Nikhil. हाफ शेयर सुरभि ले रही है और हाफ शेयर निखिल ले रहा है. किसका? 1/3 का. ठीक है. आफ्टर देन यू कैन कैलकुलेट एंड यू कैन सॉल्व एंड कैलकुलेट न्यू रेशियो एंड गेनिंग रेशियो. ओके, सो गेनिंग रेशियो विल बी इक्वल रेशियो बनेगी गेनिंग रेशियो में, इसमें 1/1 एंड यू कैन कैलकुलेट न्यू रेशियो विद दिस स्टेटमेंट. ठीक है, सेम पॉइंट था, बस उसका हाफ करना है. चलिए नेक्स्ट इलस्ट्रेशन नंबर 12. Illustration number 12. ABC were partners sharing profits in the ratio of 3/8, 1/2 and 1/8. A retires and surrenders 2/3 of the share is in favor of B and remaining in favor of C. Calculate new profit, new ratio and gaining ratio. So again we can do this question. This method is same. A share will be divided between B and C in the ratio of 2/1, means 2/3 and 1/3, and B will gain 2/3 share of 3/8 and C will gain 1/3 share of 3/8. So you can do this question. Illustration number 13. A, B, C, D were partners in a firm sharing profits and losses in the ratio of 3/2/1/4. There are 4 partners. Okay, 3, 2, 1, 4. So A decide to retire from the firm and his share is acquired by B and C. Only B and C. Okay, D is not taking anything. And in the ratio of 3/2. जिस ratio में भी वो acquire कर रहा है, that ratio will be gaining ratio. And only 2 partners are acquiring, so that's why इन दोनों का ही आपको कैलकुलेट करना है. So according to agreement, calculate the new profit sharing ratio and the gaining ratio. This question also you can do by yourself. Same question है, same method you will use. Okay. Come to the next point. Next question. Illustration number 14. Yes, students. On 1st January 2008, Uday and Kushal entered into the partnership with fixed capital of the rupees 7 lakh and 3 lakh respectively. They admitted Govind as a new partner on 1st January 2010. So first of all we will admit, so calculate करेंगे new profit sharing ratio तीनों partners की. Then Govind brought 10 lakh as capital and new profit sharing ratio decided was 3/2/5. Okay, so new ratio already given है. So you can calculate sacrificing ratio if it is required in this question. Okay.
Govind brought 10 lakh as capital. Okay, new profit sharing ratio is given. यहाँ तक clear है? Then on 1st January 2012, another new partner Hari was admitted with a capital of rupees 8 lakh for 1/10 share in the profits, which he acquired equally from the Uday, Kushal and Govind. तीनों से equally acquire कर रहा है, means 1/3 of 1/10. ओके 1/3 क्यों किया? क्योंकि 3 पार्टनर हैं उसके आने से पहले और तीनों से एक्वायर करेगा इक्वली. सो उसका शेयर है 1/10. तो 1/10 का इक्वली डिवाइड कैसे होगा? क्योंकि 3 बंदों से लेना है, तो 1/3 वी विल कैलकुलेट 1/3 ऑफ द 1/10. ठीक है. एंड कुशल एंड गोविंद, यस, तीनों से. देन ऑन 1st April 2014, गोविंद डाइड. गोविंद कौन था? जो थर्ड पर्सन आया था, जो सबसे पहले आया था एडमिट, थर्ड पर्सन. उदय और कुशल वाज ओल्ड पार्टनर्स. फर्स्ट ऑफ ऑल गोविंद एडमिटेड, देन सेकेंडली अनदर पार्टनर हरि वाज एडमिटेड. ठीक है. सो गोविंद डाइड एंड हिज शेयर वाज टेकन ओवर बाय उदय एंड हरि इक्वली. अब उसका शेयर सिर्फ उदय और हरि इक्वली कंट्रीब्यूट कर रहे हैं. जो न्यू पार्टनर हरि आया था उसको इसका कोई शेयर भी नहीं मिलेगा. ठीक है. सो नाउ कैलकुलेट. First point is the sacrificing ratio of Uday and Kushal on Govind's admission. So first case जो है उसमें आपके पास old ratio भी given है and new ratio भी given है. Old ratio is not given, so you will take equally. क्योंकि अगर कोई ratio आपके पास given नहीं होती है then आप उसको equal ले लेते हैं. So Uday and Kushal की जो ratio होगी that will be equal. Okay. And new ratio is given 3:2:5. So you can calculate sacrificing ratio in illustration number 14. Old ratio is equal to 1:1. New ratio is equal to 3:2:5. Okay, you can calculate sacrificing ratio. Okay. Then second point, new profit sharing ratio of Uday, Kushal, Govind and Hari on Hari's admission. Hari के एडमिशन पे जब आप तीनों की न्यू रेशो निकालोगे, मीन्स हरी जो आ रहा है वो तीनों से इक्वली कंट्रीब्यूट कर रहा है, तीनों से ही ले रहा है, एक्वायर कर रहा है अपने शेयर का इक्वली. ओके, दिस शेयर वाज 1/10. ओके, 1/3 of 1/10 is equal to 1/30. So 1/30 he will acquire from all partners. All old partners, है ना. तो you will deduct 1/30 from all the partners share. और सभी partners के शेयर में से 1/30 you will deduct. So you can calculate new profit sharing ratio. Okay, second part भी हो जाएगा. Means 1/30 आपने सब में से ही माइनस कर देना है तीनों पार्टनर्स में से, और इसका शेयर तो 1/10 ऑलरेडी गिवन है आपके पास. Then third point is new profit sharing ratio of Uday, Kushal and Hari on Govind's death. अब डेथ के टाइम पे उनकी रेशियो निकालनी है. पहले न्यू रेशियो देख लेते हैं. न्यू रेशियो आफ्टर दिस प्रोसेस, सेकंड स्टेप के बाद जो आपके पास न्यू रेशियो आएगी, दैट विल बी 8:5:14:3. ओके, दिस इज द रेशियो. ओके, जब ये रेशियो थी तो गोविंद की इसमें डेथ हुई है और गोविंद का शेयर क्या था इसमें? थर्ड नंबर पे था, मींस दिस वन. ओके, गोविंद डाइज तो 14 जो शेयर है 8 + 5 13, 13 + 14 27, 27 + 3 30, total is 30. So 14/30 is the share of Govind. गोविंद का जो शेयर है वो कितना है? 14/30. और that share will acquire only Uday and Kushal. ये सिर्फ दो बंदे ले रहे हैं और वो भी equally. So we will calculate 1/2 of the 14/30. इसका हाफ कर लेंगे 2 7. It means it will be 7/30. ओके, उदय और कुशल में 7/30 आप ऐड कर देंगे, उदय में भी और कुशल में. तो उदय का शेयर कितना है? उदय शेयर, न्यू शेयर निकालेंगे इसमें 8/30 प्लस 7/30. 8/30 तो उसका पहले ही था और 7/30 अब उसको मिल रहा है गोविंद का शेयर. ठीक है. देन कुशल न्यू शेयर कितना आएगा? 5/30 प्लस 7/30.
30। ओके, गोविंद तो उसकी तो डेथ ही हो गई है, इसका शेयर आप स्किप करेंगे। और उसके बाद है हरी, हरी's शेयर विल अनचेंज्ड, इसमें कोई चेंज नहीं करेंगे हम, तो इट विल बी 3/30। ओके, कैलकुलेट ऑल दिस रेशियो। 8 + 7 15/30, 12/30, 3/30. So ratio will be 15:12:3. 15:12:3. कट कर सकते हैं इसको, 3 1 जा 3 4 जा 3 5 जा. It will be 5:4:1. 5:4:1. That wait. Uday ratio will be 8/30 plus 7/30. इसका था सॉरी 3/30. उदय एंड हरी इक्वली, मेरे को लगा कुशल कर रहा है, कुशल नहीं कर रहा बेटा, हरी इसमें ले रहा है शेयर, तो वी विल ऐड इन हरीज शेयर, दैट इज द चेंज. So Kushal share will be unchanged. It will be 5/30. Okay. तो हरी ले रहा है, उदय एंड हरी will share equally. मेरे को लगा कि शायद कुशल ले रहा है, लेकिन कुशल नहीं ले रहा है, उदय और हरी ले रहे हैं equally. So we will add 7/30 in Hari's share. So 7 plus 3 10. 10/30. The share will be 15:5:10. 5 से कट हो जाएगा ये, 5 3s are 5 1s are 5 2s are. So ratio will be 3:1:2. Okay, done. Do it fast. Illustration number 15. ABC are partners sharing profits in the ratio of 4:3:2. A retires from the firm and it is decided that profit sharing ratio between B and C will be same as existing between A and B. Calculate new ratio and gaining ratio. This is a very important question. Let's do. So I'm again reading. Listen carefully, students. ABC are partners. Ratio is given 4:3:2. Okay. And A retires from the firm and it is decided the profit sharing ratio between B and C. अब रह कौन गए? B and C. अब इनकी न्यू रेशियो आपको डिसाइड करनी है. It will be the same as existing between A and B. जब A और B थे, जो रेशियो उनकी थी वही रेशियो B और C की होगी. ठीक है? So calculate new ratio and gaining ratio. ठीक है? So ratio between A and B, A और B की रेशियो कितनी थी? A and B की रेशियो 4:3. और न्यू रेशियो बिटवीन बी एंड सी जो हम करना चाहते हैं, न्यू रेशियो बिटवीन बी एंड सी, क्योंकि बी और सी की भी हम उसके इक्विवेलेंट ही करना चाहते हैं, विल बी मतलब ये होगी इसके इक्विवेलेंट 4:3. लेकिन अभी इतने नहीं है, अभी ये 3:2 है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल कैलकुलेट गेनिंग रेशियो. कैलकुलेट करेंगे पहले तो इनका गेनिंग रेशियो. तो फॉर्मूला विल बी न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो. ओके, तो बी कितना गेन कर रहा है? बी और सी, क्योंकि ए जा रहा है तो उस ए का पूरा शेयर किसको मिलने वाला है? बी और सी को. ठीक है, बी का ऑलरेडी जो शेयर था इसमें 4 + 3 7, 7 + 2 9. So B's share is 3/9 and C's share is 2/9. Okay, और ये तो होगी ओल्ड रेशियो. दिस इज द ओल्ड रेशियो एंड न्यू रेशियो ये होगी इनकी. ठीक है, तो वी विल यूज दिस फॉर्मूला न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो. न्यू रेशियो में क्या है? 4/7 और ओल्ड रेशियो में क्या है? 3/9. सो 4/7 माइनस 3/9. ठीक है, न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो. और इसमें क्या है? 3/7
C का शेयर 3/7 माइनस 2/9। ओके, इसको कैलकुलेट कर लो, आपकी रेशियो कैलकुलेट हो गई, आ जाएगी, गेनिंग रेशियो निकल के आ जाएगी यहाँ से, will be 63, 36, 21, 36 minus 21, it will be 15/63. Okay, second point 63, 27 minus 14, 13/60. ठीक है, so ratio, gaining ratio will be 15/13. 15/13. Okay, that is the answer. Yes, students, we have completed 15 illustration. So you will do from illustration number 8 to 15 in practice notebook, and from the back exercise question number 8 to 15 in fair notebook. Okay, students, thank you, students, have a nice day.